everyone, I am Sakshi. Today I want to share with you some more about elements in HTML. Before that, we will understand what is HTML. So, HTML stands for the Hypertext Markup Language and it is created by Tim Berners-Lee in 1991. Hypertext Markup Language is a foundation of the every web pages and defines the structure content of the website, including text content of a website with image, links, and multimedia elements. By using the series of tag elements, it's not a programming language. HTML is not a programming language, but it's a markup language, meaning it uses tags to mark up text the other content to be displayed in a web pages. So HTML is uses tags and elements to structure the content. So let us first understand what is elements in HTML. So elements means it is a fundamental building blocks of HTML documents and it is represent the complete functional unit on a web page. Elements is the combination of the start tag, then content tag, and last is the end tag, and it is specify the general content in the HTML. Next, it is basic structure of the HTML used to creating a web pages. Doc type is nothing but the instruction at the beginning of the an HTML document tells it is the file of the HTML. Then next is a HTML. It is for the define the HTML files. Then head. Then head is a contains all header information on a web pages. Then next is the heading tag. Heading tag is used to define the heading. Paragraph is defined to the paragraph. It is the opening tag. Then it is the end tag. For example, HTML, then it is a body tag, it is a close opening tag, and it is a closing tag. Then next, elements with description. Here it is some basic elements with description and syntax also I can add it. It is a heading tag. It defines the heading in HTML. Then paragraph defines the paragraph. Then image and मार्क इज नथिंग बट यूजिंग द हाईलाइट द टेक्स्ट. अगर हमें कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो हम यूज करते हैं मार्क लैंग्वेज. जो टेबल इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ टेबल. okay, next is a basic program for displaying the web page. So I can add I added three types of the heading. It is a three types of heading and it is title. So here it is output for this program. Display the three types of the tags which we can add here. Okay, it is a first heading, it is second and it is a third. नेक्स्ट इज ये मैंने एक छोटा प्रोग्राम डिस्प्ले किया है जिसमें बेसिक टैग्स मोस्टली कवर हुए हैं. हियर इट इज अ output for this program. Okay, welcome to my web pages. It is welcome to my web pages is a heading for my web page. Okay, and image, it is my paragraph. Here it is my image and it is a table. Next, it is a it contains the short information for all of these elements. we can which is helpful for us. okay, यहाँ भी मैंने some basic elements डिस्प्ले किए हैं उसके डिस्क्रिप्शंस के साथ. ये आपको यूजफुल होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल ले और लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अवर मेन मोटो ऑफ दिस main motto of this video is a interview level questions. So we will see one by one interview level question. So first is a difference between division and span. Division is a what is division? Division is nothing but the container used for grouping large sessions or it is defines the HTML documents often used for layout. Okay, डिवीजन ये लेआउट के लिए यूज करते हैं, तो स्पैन ये किसके लिए यूज करते हैं? स्पैन यूज करते हैं किसके लिए? स्टाइलिंग फॉर और स्टाइलिंग अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट.
टेक्स्ट को स्टाइल करना हो तो हम स्पैन यूज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड स्पैन. इट इज अ सिमेटिक HTML. सो ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज सिमेटिक HTML एंड हाउ इट इज यूज्ड, ये भी पूछा जा सकता है. तो इस next is a what are the self closing. Self closing is nothing but the do not require a closing tag. It is nothing but the self closing. Next, ये पूछा गया था इन्फोसिस में what are the global attributes in HTML. Here it is 5 types of the global attributes in HTML: ID, class, style, title, and the data. So it is a description for each global attributes. आप पढ़ सकते हैं यहाँ और आपको इजीली समझ जाएगा. कुछ नहीं है. आईडी क्या है? इट इज अ नथिंग बट आइडेंटिफायर टू एचटीएमएल एलिमेंट्स यूज्ड फॉर स्टाइलिंग. और क्लास assign one or more class. Then next style is the, it is for CSS style. And title provides the title. Then data is nothing but the in जावास्क्रिप्ट. सो ये बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन है जो कैपजेमिनी पूछा गया था, अभी भी पूछा जाता है. व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. You are creating a web page with a session for blog post. Which HTML elements would you use and why? Okay. So what is the question? आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है किसके लिए? फॉर ब्लॉग पोस्ट. सो उसके लिए क्या यूज करना है आपको? HTML एलिमेंट्स यूज करना है आपको. और आप कौन से HTML यूज करेंगे और क्यों? सो इट इज एक्सपेक्टेड आंसर. I use the session for a grouping blocks, articles for post, and H2 for titles. Okay, and semantic tags for accessibility. What is semantic tag? Header, footer और article के लिए यूज होता है, हमने पिछले स्लाइड में देखा था. सो ये है, मैंने कहा था इसका यूज होगा. सो इसे एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. इस ऐसे ही पूछा जाएगा. ओके, ऐसे ही पूछा जाएगा जो यहाँ पूछा गया है वैसे. ओके. So it is a all elements which is used for this creating web pages for blog poster, and it is purpose for all these elements. Here it is code for this element and this output. Okay, I hope you will understand all the points, and thank you for joining me. Have a good day. Have a nice day. Bye.